Okay, so I made a fake account yesterday night to show you what does the application looks like. Application is pretty simple, self-explanatory. It is not a very hard application to fill. What you will need to do, you first of all, you will register yourself, okay, on the link that I have provided on USCFP website. Register with your CNIC and give a good email address. Ideally your IBA email address, right? Register with that and start your application. They will send you a link in your email and then go to that link. If you cannot find it, check in a spam folder, but usually it's in the inbox. Go follow that link and it will take you to your application. Just log in again and you can begin your application, and you will see at the side this panel. So this panel, there are a lot of information, important information written right on the first page of the application. So first thing that you should do is very, very carefully read those instructions. Many of them we will be talking with you about, but you should yourself also again and again read what do they want, what are the requirements, how can I fill the best application. So the second part is personal information. Very simple. You just need to upload your name, address, etc., phone number, email, ID, etc. And just one thing that sometimes students get confused about is the your given name and your surname. Okay, so your given name is your first name. Okay, so meaning my name is Aisha Salim. So my first name is Aisha, and my surname or family name is Salim. So this will be the name that you will have on your CNIC and on your passport. So be mindful that you put the correct order of the name. Okay, don't mess it up. Then we have academic information. Also a pretty simple section. Just upload where you did your matriculation, intermediate, what were the marks, where are you studying in for your university, in which year you are, etc. Just basic information. And if you have any further difficulty with these sections, you feel free to ask us. The only, yeah, before that, so after academic information, the additional information section is also pretty self-explanatory. The only thing that you might feel a bit confused about is this section, non-academic activities, okay? So these are the activities that I was talking about earlier, okay, for which you will require some certificates or proofs. So this besides the personal statement part, which Pankaj will be talking about, the personal statement is the most important part of the application, hands down. But this is, in my opinion, also one of the most important parts, because it entails that what you have been doing besides your education, okay, what sets you apart, what makes you stand out. So in this section, you will tell all of it, whether you have done some initiative, have you taken any initiative in your society, and what have you been doing after classes, okay, any sports activities, any competitions, seminars, conferences, workshops. There could be a lot of examples that you can mention here and try to get a hold of a certificate or some kind of proof that you can show that and demonstrate that really you did those things and how these things helped you, what you are, to be what you are today. And these, in my opinion, these are the things you will also slightly discuss in your personal statement as well. So this section is also one of the very important, because Ugrad, they don't want only, they look for a very diverse personality, okay? So they don't want only 4 out of 4 GPA holders. Your GPA should be good, but besides that, what else you have done. So these things matter. Your extracurricular, co-curricular, your community service activities, etc. Okay, so here you will mention those things, and telling you that you can upload up to 10 activities. Okay, so, and what are my tips for the application? For every part, for every section of in the application, they have given the general instructions with every part. For example, here in part number 23, before that they have written a note. So with every section, this is the case, and you should very, very carefully read these instructions and follow them to the dot, okay? So read very, very carefully, and if you have any doubts, you feel free to ask any alumni or even USCFP. You can email them at info.uscfp. You can check out the email. And also, yes, sir, they're very efficient in replying and guiding. Yes.
But yeah, that's the thing. You are left with only 1 week, so you have to manage your time as well. So besides that, please do not ever lie or hide anything from your application, because eventually they will find out. At any stage they can find out, maybe at interview stage or later, and your scholarship could be jeopardized because of only that little bit of mistake. Okay, so try, I mean, absolutely don't do that, otherwise you will lose your chances if you have even. So yeah, so with that I would say that I would conclude my presentation, and I would just, my final remark will be, enjoy the application process. Okay, it could be a little bit of intimidating, but this application process in itself is a learning opportunity for you. Okay, and in life you will be applying for several other jobs and opportunities, so this is a learning process. Enjoy it, put in your best effort, do your best, and hopefully leave rest to the fate, and hopefully you will, I wish you all the best. Okay, thank you very much. Pankaj will be talking about the other most important part of the personal statement. Thank you so much, Aisha. I believe students would have got a clear idea of application process. The core of Mansfield comes from new experiences. Keeping this in mind, I would like to call Mr. Pankaj Raj to share his experience process till selection. The stage is open for you. So we are going to talk about personal statement. This slide should not have been opened. तो मैं आप सब में से जानना चाहूंगा कि किसने अपना होमवर्क किया है. जिसको पर्सनल स्टेटमेंट का पता है थोड़ा हाथ ऊपर कर लें. I would like a few answers. Not you, please. Okay, so I see very few hands. Can you please tell me about it? All right. Sorry. You covered almost all points. I saw a hand in the back. Yeah. अंडरस्टैंडेबल. तो इन लोगों ने काफी चीजें कवर कर दी हैं. बाकी जो रह गई मैं कोशिश करूंगा कि मैं पूरी कवर कर लूं. पहले तो पर्सनल स्टेटमेंट है क्या. ये एक बेसिकली ऐसे होता है जो 200 से 250 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए. समवेयर बिटवीन 200 to 250 वर्ड्स. You can either write 210, 220, 215, however you like it, but you cannot write less than 200, more than 250. Okay, and it is the most crucial part of your statement of your application. And उसका रीजन ये है कि बाकी जो भी चीजें आप लिखेंगे ना उसके अंदर वो सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं. आपकी CGPA, आपकी एक्टिविटीज, आपकी स्कूलिंग, आपकी लोकेशन, बैकग्राउंड, UTC, ये वही चीज है जिसमें आप जितना क्रिएटिव होना चाहे हो सकते हैं. और उसके साथ साथ आप यही एक 250 वर्ड्स होते हैं जिसमें आप कम्युनिकेट करते हैं अपने रिव्यूअर के साथ. यू कैन टॉक विथ हिम, हर, whosoever. So it should answer 4 points that the guy in the back also mentioned. I'll let you know afterwards. The answers should be specific and should not contain vague ideas. देखिए हम जो भी लिख रहे हैं ना उसमें हम बहुत ज्यादा हवाल भी कर सकते हैं. नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स क्रिएटिव राइटिंग, इट्स ओपन एंडेड. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इसमें वो चीजें लिखनी है जो रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो. वो गोल्स लिखने हैं जो रियलिस्टिक भी लगे. अगर मैं कह दूं कि मैं पूरे पाकिस्तान को चेंज कर दूंगा, सो दैट्स नॉट पॉसिबल. मैं इंडिविजुअल नहीं करता. हाँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी को रिटर्न करूंगा. किस तरीके से वो मुझे थोड़ा डिफाइन करना है. स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए. जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, पहले तो इस पे ऐसे के सारे बेसिक रूल्स अप्लाई होते हैं. किसी स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके सपोर्टिंग लाइंस होनी चाहिए, उसके बाद पैराग्राफ खत्म हो, सेकंड पैराग्राफ फर्स्ट पैराग्राफ से कोहेरेंस के अंदर हो. ऐसा ना हो आप ऊपर कुछ और चीज की बात करें और सेकंड पैराग्राफ में आपने फुल 100% कोई नई चीज बता दी जिसका कोई ताल्लुक भी नहीं था आपके एप्लीकेशन साथ या आपके साथ. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये उनकी वेबसाइट से स्क्रीनशॉट लिया गया है जहां पे उन्होंने खुद बताया कि the essay is an essential part of the application process and your application for placement into an appropriate program. तो इन पॉइंट्स को आगे चल के डिस्कस करते हैं. The first point is
इंटरेस्ट्स एंड पर्सनैलिटी। ठीक है, इंटरेस्ट पर्सनैलिटी आपकी, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे हम 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट है, कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई स्टडीज पे फोकस करता है, कोई सोशल एक्टिविटीज पे फोकस करता है, कोई फ्रीलांसर है, कोई टेक्निकल राइटिंग करता है, कोई मीडिया साइंसेस के अंदर इंटरेस्टेड है, वो पढ़ बीबीए रहा है, तो उसके गोल्स डिफरेंट हैं, उसकी पर्सनालिटी इंटरेस्ट टोटली डिफरेंट होते हैं। तो आपको खुद से क्वेश्चंस करने हैं कि व्हाट इज योर पर्सनालिटी, व्हाट आर योर इंटरेस्ट्स दैट यू ट्रूली लव, जिस पे आपने काम किया भी हुआ। ऐसा नहीं है कि आई लव रीडिंग बट मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी एक्सेप्ट फॉर माय कोर्स बुक्स। ओके, व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव एंड व्हाट आर इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट इट। तो देखें, आपकी पर्सनालिटी में से कोई तो ऐसी बात होगी जो आपको रूम में बाकी जो लोग हैं उनसे अलग करती होगी। वो चीजें सोचें और अपने साथ अलोन टाइम स्पेंड करें, जिसमें आप ये चीजें जॉट डाउन करें पेज पे, जैसे जिसको हम फ्री राइटिंग भी कहते हैं, ऐसे राइटिंग के अंदर, तो वो करें और अपने सारे जो पॉइंट्स है इंटरेस्ट के पर्सनैलिटी के वो अपने पास राइट डाउन करें। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है व्हाट थिंग्स डिफरेंशिएट यू एज एन इंडिविजुअल। तो जरूरी नहीं है कि आपके इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी है जो आपको डिफरेंशिएट करे, लेकिन आपका बैकग्राउंड भी हो सकता है, आपकी स्ट्रगल भी हो सकती है। हो सकता है आप किसी ऐसे एरिया से हो जहाँ पे स्कूलिंग का कोई कॉन्सेप्ट ही ना हो, फिर भी आप गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, लेकिन किसी तरह से आप इस यूनिवर्सिटी में पहुंचे और उसके बाद अब आप यूग्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो पार्ट है जहाँ पे आप अपने बारे में बता सकते हो और आपको वो बतानी है चीजें जो रियलिस्टिक हो, क्योंकि जब आप इंटरव्यू के लिए अगर इंशाल्लाह आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जब आप होंगे तो आपसे इन चीजों के बारे में पूछा जाएगा कि हाउ वाज दिस, हाउ वाज दैट। जैसे मैंने अपने बारे में लिखा था कि आई टुक अ 3 ईयर गैप आफ्टर माय इंटरमीडिएट, तो मुझसे पूछा गया था व्हाई डिड आई डू दैट, व्हाट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। तो जो चीजें आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में लिखेंगे वो आपको आगे चल के जस्टिफाई करनी पड़ेंगी अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। अगर ना हुए तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। Second point is academic objectives. So academic objectives are your current studies. What are your current academic objectives? What is the purpose of the thing that you are studying right now? आप जो भी पढ़ रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, बीएस मैथमेटिक्स कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, बीई कर रहे हैं, बीएससीएस कर रहे हैं, बीएस मीडिया स्टडीज कर रहे हैं, बीएस इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, व्हाटसोएवर, क्यों कर रहे हैं? क्या आपके करियर ऑब्जेक्टिव्स थे ना? आपने क्या सोच के ये चीज उठाई थी? वो चीज आपके पर्पस को कैसे सर्व कर रही है जो आपने अपने फ्यूचर के लिए सोचा है, और करंटली आप क्या करें, आपको करंट चीजों का बारे में बताना है। और इसके साथ साथ व्हाट थिंग्स आर यू डूइंग टू बिल्ड स्किल सेट। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास तो कोई तो स्किल सेट होगा जो आपको डेवलप करना होगा अलॉन्ग साइड। फॉर एग्जाम्पल आप एक टेक्निकल इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो डिग्री लेने से तो सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको अपनी स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेंगी, जैसे पीसीबी डिजाइनिंग हो गई, मैटलैब हो गई, इस तरह के जो भी सॉफ्टवेयर हैं, ये सब आपके स्किल सेट डेवलप करते हैं। इनके लिए कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज में, आप खुद से सर्टिफिकेशंस भी करते हैं। आप इनमें वो चीजें बता सकते हैं जो आपने अपनी डिग्री के अलॉन्ग साइड की हुई है, दैट इज नॉट इन योर क्लासरूम। इसके बारे में किसी कोई पॉइंट में कंप्लीट कर लूं तो यहीं पे हाथ रेज कर लें, क्योंकि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। द थर्ड पॉइंट इज दैट यू कैन स्टेट योर अचीवमेंट्स एंड रिलेट देम विद योर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो आपकी जो भी अचीवमेंट्स हैं, आपने स्टूडेंट्स को मेंटोर किया हुआ है, आपने कहीं ब्लड डोनेशन ड्राइव्स के अंदर सर्व किया हुआ है, आपने कम्युनिटी सर्विस की हुई है, आपने बिल फर्ज कह सकते हैं सर्टिफिकेशंस की हुई हैं, आपने ऑनलाइन टीचिंग की हुई है, व्हाटसएवर फ्रीलांसिंग करते हैं आप शायद, तो आप इसमें बता सकते हैं। दैट एड्स टू योर एबिलिटीज, दैट एड्स टू योर स्किल सेट। क्योंकि जब आप काम करते हैं फ्रीलांसिंग में तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जब काम करते हैं, सो दैट गिव्स यू अ पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो अभी क्लियर कर लेते हैं। एनीबॉडी? ओके, या तो आपको बिल्कुल समझ आ गया या तो बिल्कुल समझ नहीं आया। दैट हैपेंस व्हेन देयर आर नो क्वेश्चंस। सो थर्ड पॉइंट इज गोल्स रिलेटेड टू योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड पर्सनल डेवलपमेंट। अच्छा, एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स और इसके अंदर लोग भूलते हैं मोस्टली। एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं, जो आपके होते हैं, वो अंडर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट करने तक होते हैं, क्योंकि अभी आप अपने सेकंड या थर्ड ईयर में, तो आप अपने फोर्थ ईयर तक के प्लान्स बताते हो, आपने स्टडी क्यों उठाई, उसके बारे में क्या कर रहे हो, कैसे स्किल सेट बिल्ड कर रहे हो, एक्सेट्रा। और इसमें आप बताते हो कि आप बैचलर्स के बाद क्या करना चाहते हो और अपनी पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में क्या करना चाहते हो। बेसिकली हम कहें तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स रिगार्डिंग योर फील्ड ऑफ स्टडी एंड फ्यूचर। और ये नहीं बताना कि देखें, जो भी पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है उसको सपोर्ट करना है प्रूफ्स के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ, सर्टिफिकेट्स के साथ, आपके एक्सपीरियंस के साथ। क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अपनी पर्सनल स्टेटमेंट में कह दूं कि मैं एक टॉपर स्टूडेंट हूं और उसके लिए मेरे पास कोई प्रूफ ही ना हो,
सीजी पे तो वहां पे शायद 3.445 लिखी हुई, लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? आप कह रहे हैं कि आपने कम्युनिटी सर्विसेज किए हैं, आप एक भी सर्टिफिकेट अटैच नहीं करते, प्रॉब्लम। आप कह रहे हैं कि आप फ्रीलांसर हैं, लेकिन आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि आप फ्रीलांसिंग में क्या क्या करते हैं, आप वहां पे हिचकिचाएं, वहां पे साइकेट्रिस्ट बैठा होता है, he'll get you, she'll get you, and you are disqualified then. तो आपने जो भी मेंशन करना है अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर, that should be supported by some evidences, proofs, certificates, experiences, anything. You can, in the non-academic area where Aisha told about additional information, वहां पे 10 एक्टिविटीज जहां पे आपको ऐड करनी है, वहां पे आप अगर आपको सर्टिफिकेट्स नहीं है, कोई फेसबुक पेज है जहां पे आपने वो चीजें शेयर की थी, तो वहां पे वो आप टाइप ऑफ एक्टिविटी के अंदर ऊपर लाइन में मेंशन करके कि व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी इट इज, देन यू कैन गिव द लिंक टू फेसबुक, your LinkedIn profile, wherever the document or YouTube video maybe, you could, even attach that. So you just have to make sure the things that you are saying, you are telling, you are mentioning, they are supported by certain proofs. You get my point? और गोल्स रिलेटेड टू फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर आप कैसे बताएंगे कि आप 5 साल बाद क्या बनना चाहते हैं, इसके लिए क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आई विल कोट माई एग्जाम्पल। मैंने बताया था कि मैं 5 साल बाद एक एंटरप्रेन्योर इंजीनियर बनना चाहता हूँ, इंजीनियरिंग साइड पे मैं एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता हूँ। उसको बैक मैंने कैसे किया था? मैंने एंटरप्रेन्योरशिप बूट कैंप के अंदर 2nd पोजीशन ली हुई थी। इंजीनियरिंग के अंदर मैं सर्टेन प्रोजेक्ट्स कर रहा था टेक्निकल, जिनको मैंने मेंशन किया था और जिनकी मैंने लिंक्स डाली हुई थी। उसके साथ ही साथ जो मैंने पब्लिक स्पीकिंग की हुई थी, वो मैंने बताया था कि वो मुझे एज एंटरप्रेन्योर काम आएगी। तो जो आपने चीजें एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स के अंदर बताई हैं, आपने किया है एज को करिकुलर एक्टिविटी, एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एज कम्युनिटी वेलफेयर, तो वो आपके उनको रिलेट करना है आगे, कोहेरेंस बने आपस में। पूरा ऐसे जैसे होता है ना, पहले इंट्रोडक्शन, बॉडी, देन यू कंक्लूड, द लास्ट पैराग्राफ इज कंक्लूडिंग, दिस इज द बॉडी। आपकी जो बॉडी के पैराग्राफ है वो आपस में कोहेरेंट हो, ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा। So the last point is very crucial. Okay, the second and third are somewhat the things that you have done. You just have to mention them. What are the best ones? But the first and the last paragraph is the most creative one. Interest, personality, background, struggle, all the things that you're doing. You can write whatever you want. You can write whatever, if you speak lie with confidence, that can also be turned into truth. But you have to do that very carefully. आप शायद कुछ अभी मेंशन कर लें और 4 महीनों के अंदर आप अचीव कर लें, you can also mention that. But you have to be sure that you will be able to do it if you get selected, because they'll ask you, for sure they will ask you from your personal statement. जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, they have your printed CV, transcripts, not CV, and your personal statement and your documents in front of them, the certificates as well. तो वो आपसे पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में तो हर किस्म का सवाल पूछेंगे, जिससे पता चले कि what you have written is either true or not. क्योंकि आप किसी और से भी तो पर्सनल स्टेटमेंट लिखवा सकते हैं ना। दिस इज जस्ट लाइक एन ऑनलाइन एग्जाम, इससे भी लिखवा लो, बट यू आर द ओनली वन हु हैज टू जस्टिफाई इट इन द इंटरव्यू. सो द रीजन व्हाई यू विश टू परस्यू देम in the United States of America and how it relates to your interest and future objectives. So this paragraph concludes all your 3 paragraphs. Why you wish to pursue them, the objectives in United, and how it relates to your interest and future objectives. The 3 things that you mentioned, now you have to tell why you want to do them in United States of America. For example, जो भी चीज आप कर रहे हैं, जिस भी फील्ड के अंदर आप हैं, उसके लिए यूएस के बारे में पढ़ें. वहां पे उन चीजों के अंदर कौन सी यूनिवर्सिटीज बेस्ट हैं, टेक्नोलॉजी कौन सी अच्छी चल रही है, वहां पे क्या आजकल लेटेस्ट आया है, जिसमें आप बता सके कि यू वांट टू परस्यू देम इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिकॉज इट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट फाइनेंशियल प्लान्स, लेटेस्ट एजुकेशनल साइट्स, व्हाटएवर. आपकी फील्ड कोई भी हो सकती है. आप बीबीए के अंदर होके भी वहां पे मीडिया साइंसेस पढ़ सकते हैं. You are open-ended, but you have to prove that you have the skill set and you are already doing something to do that in America. ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कुछ नहीं किया और आप, मैं यहाँ बीई का होके वहां पे कहूँ कि मुझे सीधा जाके वहां पे ना बीएस फिलोसॉफी पढ़नी है. अगर मैं पढ़ना चाहता हूँ मैं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास प्रूफ होने चाहिए कि मैं बीई में पढ़ रहा हूँ, बट आई हैव इंटरेस्ट, पैशन इन फिलोसॉफी. So these are the co-curricular activities, certifications, online things that I've been doing for that, and they'll support me in my application form. And yeah, I've seen people doing that. जो मेडिकल एमबीबीएस के बच्चे होते हैं वो वहां पे जाके एमबीबीएस की कोर्सेज नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारे मेडिसिन और उनकी मेडिसिन फील्ड टोटली डिफरेंट है. So they go there, study psychology, they study their basic medicine, then they study their physics, whatsoever they want to. They study their arts, media sciences, because उनको अपनी फील्ड नहीं मिलती. So they wake up with the plans that they have been doing here in Pakistan alongside their degree.
Why do you wish to pursue your goals in United States? जरूर यहाँ पे नहीं कर पा रहे, यहाँ पे नहीं करने, वहां पे करना चाहते हैं, तो उसका कोई रीजन होगा. जो रीजन आपने बताना है उसको बैक करना है कि आप वापस आके उसको किस तरह अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करेंगे. ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए $30,000 से $50,000 खर्च कर रही है, जो कि एक ह्यूज अमाउंट है, वो नहीं चाहेगी आप जो वहां पे सीख के आए वो लर्निंग यहाँ तक अपने पास ही रखें. They want you to pass it forward. They want you to conduct seminars. They want you to take the community development initiatives that Aisha was talking about when you are an alumni, when you come back, so that you pass on the learning, you pass on the exposure you got. How this program relates to your interest and objectives, ये आपने बताना है. ये आपने किस तरह से बताना है, जो आपके इंटरेस्ट है, जो ऑब्जेक्टिव्स थे. फॉर एग्जाम्पल एक फ्रेंड था मेरा, ही वॉज इन मीडिया साइंसेज, मोस्ट ऑफ यू माइट नो हिम, ही इज अ ड्रॉप आउट ऑफ सक्कर यूनिवर्सिटी, मुसव्विर लाशारी, मासी मोरा, if you guys know him, he is a YouTuber. So he was a media science student when he was applying. So he already wrote a novel in Pakistan when he was here in Ikra. He wrote Kash Hum Chakor Hote. This is a novel in Urdu. So he also mentioned in his personal statement that he will be writing a novel on student life in United States of America, and also he has written a book over here. तो इसकी जो बात थी वो बहुत बड़ी थी कि वो वहां पे स्टूडेंट लाइफ पे पूरी बुक लिखेगा, लेकिन उसको बैक करने के लिए उसके पास एक एविडेंस था कि उसने ऑलरेडी एक बुक लिखी हुई थी, इसकी लिंक उसने ऑलरेडी दी हुई थी अपने पेज पे. तो इससे क्या हुआ कि उसको सपोर्ट मिल गया और उसका जितना हाई लेवल का आइडिया था वो एक्सेप्ट हो गया. तो इसी तरह से जो आपका दिस मूव्ड ऑन फॉरवर्ड. तो इसी तरह से जो आपके इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो रिलेट करते हैं आपके पीछे वाले जो काम आपने किए हुए हैं उनके साथ ही साथ. थर्ड प्रोग्राम इज हाउ विल दिस प्रोग्राम अचीव यू, हेल्प यू इन अचीविंग योर एम्स इन यूएस. आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, यूएस हमसे आगे most of the times, except for religion and stuff, because they do not really believe in religions. तो उस हवाले से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में क्या स्पेशल चीजें हैं, थोड़ा पढ़ें, रिसर्च करें, then you have to write it. Moving forward, these are the tips that USCFP posted on their page 2 days back, and they mostly cover the things that we told you about, but a few new points, so I'll cover that. So the personal statement section has word limit of 250, and this is simply, and this says this is the only section in the application where you can interact with your reviewer. ठीक है, जो मैं आपसे बता रहा था कि these are the only 250 words जिसमें आप अपने reviewer के साथ बात कर सकते हैं, communicate कर सकते हैं. Avoid repeating the information you have already filled in the application. For example, your name, CGPA, university name, and the classes you have taken or enrolled in. तो अगर आपने पीछे बताया हुआ है कि आपका नाम क्या है, यूनिवर्सिटी कौन सी में पढ़ते हैं, CGPA क्या है, कौन से कोर्सेज किए, पर्सनल स्टेटमेंट में लिख के अपने वर्ड्स आया ना करें, because you have only 250 words, they are not much. Make your essay personalized. Plagiarism will lead you to disqualification. आपको ये तो पता होगा कि अगर यूएस की स्कॉलरशिप है, so they would already have plagiarism softwares and everything. तो अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर किसी भी तरह की प्लेजरिज्म हुई तो आप वैसे ही फिल्टर आउट हो जाएंगे और आपकी एप्लीकेशन सीधा डस्टबिन में चली जाएगी, कोई ह्यूमन पढ़ेगा भी नहीं उसको. तो प्लेजरिज्म से गुरेज करें. उसके बाद मेंशन एनीथिंग दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ योर कैंडिडेट्स, फॉर एग्जांपल एकेडमिक इंटरेस्ट्स, एनी टैलेंट, स्किल्स, हॉबीज, फ्यूचर गोल्स. इफ यू हैव इन्वॉल्वड इन कम्युनिटी सर्विस उसको मेंशन करें और सबसे रिसेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट करें. फॉर एग्जांपल काफी लोग कहते हैं कि दे हैव मोर देन 10 एक्टिविटीज, मोर देन 10 सर्टिफिकेट्स. So mention the top 10 you think that are best for you, for your goals, for your career. Academic and non-academic achievements are important part of your application. Share certificates that are not more than 5-6 years old. Avoid using complex words and sentences in your application. तो मैं एक यहाँ पे आपकी confusion दूर करना चाहूँगा. They do not want you to write bombarding English. They don't think that you are studying masters in linguistics English. They know that you have your bachelor's in some other program. You just need to be proficient in speaking. You need to know how to communicate, how to write simple but perfect English, like simple English without any grammatical mistakes or errors. So that is what you need. इसीलिए आपको यहाँ पे 1 महीना दिया जाता है ताकि आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखें, फिर उसको मॉडिफाई करें, उसको ब्यूटीफाई करें. उसको बाद में आप उनके वर्ड्स को अगर आप करना चाहें तो आप उनको सिनोनिम डाल के चेंज कर सकते हैं. बट यूजिंग सिनोनिम्स आर आल्सो ट्रिकी. जो आप सिनोनिम यूज करें चेक करें कि उसकी मीनिंग कॉनोटेटिव तो नहीं है. तो क्योंकि एक वर्ड की हमेशा 2 साइड्स होती हैं, पॉजिटिव मीनिंग होती है, नेगेटिव मीनिंग होती है. सो चेक व्हाट यू आर यूजिंग, बिकॉज़ दिस इज अ वन टाइम शॉट दैट यू गेट लाइक
2 or 3 times maximum. If you are in 4-year program, you get it twice. If you are in 5-year program like MBBS, you get it thrice, 2nd, 3rd, 4th year, and now you will get in 2nd and 3rd year. And the last point is, each section of the online application has guideline tips to fill in the information. Read the guidelines mentioned in the section to help you read the complete the application. जैसे आपको आयशा ने बताया, हर सेक्शन से पहले वहाँ पे गाइडलाइंस अवेलेबल हैं, अच्छी तरीके से पढ़ें, give it your time, and then fill the form. So moving to our sample statement, ये मैंने यहाँ पे खुद नहीं रखी. इसका रीजन ये है कि जब आप अभी खुद लिखेंगे ना, बिना कोई सैंपल स्टेटमेंट पढ़े, तो आप लिमिटाइज नहीं होंगे, आप एक बॉक्स में नहीं होंगे, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. क्या पता आप कुछ ऐसा ही लिख लें, क्या शायद आप टॉप कैंडिडेट्स के अंदर आ जाएं. क्या पता आप कुछ ऐसा लिख लें जिसके जो आप कभी भी किसी ऐसा पढ़ के नहीं कर सकते, पर स्टेटमेंट पढ़ के नहीं कर सकते. बिकॉज व्हेन यू रीड समथिंग यू आर लिमिटेड टू दैट पॉइंट्स. आपने 15 SOPs पढ़ ली, आप कहेंगे हाँ यार इसने इस तरह लिखा, लेट मी राइट इन दैट वे एज वेल बिकॉज ही गॉट सक्सेसफुल. It's not the case. There are no hard and fast rules. You can write whatever you want. I will suggest you guys, खुद से अपनी पर्सनल स्टेटमेंट लिखे, be it 300, 350 words, not a problem. लिख लें, उसके बाद उसको आप करें फिल्टर, क्या पॉइंट्स बेटर हैं, क्या पॉइंट्स इंक्लूड करने चाहिए, नहीं. Then go for the sample statements. You can just go on internet and write successful global Ugrad personal statement. You'll get a few links. There are like 10-15 personal statements. You can read them. But I will suggest you do that after you write first draft of your personal statement. You write down all of your ideas that you have in your mind about yourself, your career, interest, personality. And also, you need to remember, you are cultural ambassador. So you also have to mention that you will be coming back, passing on the things that you learned from United States. And in United States, you will be mentioning, you will be exploring, you will be showing to people your own culture. Okay, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो कभी पाकिस्तानी लोगों से मिले नहीं होते. This is your chance. जब आप एज अ कल्चर एम्बेसडर जाते हो तो आप अपनी कंट्री की कैसी इमेज बनाते हो, कैसे फ्रेंडशिप बनाते हो, कैसे रिलेशंस रखते हैं आप. क्योंकि आप ये चीज नोटिस करें कि ग्लोबल यूग्रेड पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जहां से टोटल हर साल 200 से 250 बच्चे जाते हैं. बाकी कंट्री से 4-6 बच्चे जाते हैं. दिस इज स्पेशल प्रोग्राम. इफ यू गाइज हु वाज इन टच विद फॉर यूग्रेड अ फ्यू मंथ्स बैक, एक यूग्रेड आया था वर्ल्ड लर्निंग के नाम से, जिसमें बच्चे कह रहे थे कि पाकिस्तान का नाम नहीं है. वो एक यूग्रेड आता है जो पूरी दुनिया के लिए आता है. ग्लोबल यूग्रेड जो आता है वो होता है वर्ल्ड लर्निंग की तरफ से, और ये आता है सिर्फ पाकिस्तान के लिए सेपरेटली, जिसमें वो सिर्फ पाकिस्तान से बच्चे हो रहे. सो यू हैव गुड चांस compared to other countries in the world. So this is simple statement that I just showed you. You can just go to internet if you want to read it, but write your first draft and then give it time. These are the tips from my side. What makes an ideal applicant? Academic excellence. मैं नहीं कह रहा आपकी 3.8 होनी चाहिए, 3.7 होनी चाहिए, but इतनी अच्छी उतनी बेहतर. But don't worry. When I was applying, I was at 3.11. Not a great CGPA, not a below average. It was good CGPA. I got selected. Cross-cultural interest. I have a question, sir. Cross-cultural interest आपका ये है कि आप कल्चर्स के अंदर, सोसाइटल जो आपकी कम्युनिटी सर्विस है उसके अंदर कितने इंटरेस्टेड, आउट ऑफ द क्लास एक्टिविटीज के अंदर कितने इंटरेस्टेड. डेमोन्स्ट्रेटेड लीडरशिप पोटेंशियल. आपने यहाँ पाकिस्तान में जब आप थे तो आपने क्या काम किए थे. जरूरी नहीं है कि आपने यूनिवर्सिटी में किया, आपने होम टाउन में कर सकते हैं, किसी विलेज के अंदर कर सकते हैं. शायद आपने किसी स्कूल के लिए लाइब्रेरी की बुक्स डोनेशन ड्राइव की हुई है. Not a problem. Proficiency in English, both written and spoken. इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप बात कर सकें, कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब समझ सकें, समझा सकें और अच्छे तरह से लिख सकें, तो आपकी कम्युनिकेशन हो. फ्लेक्सिबिलिटी एंड सुटेबिलिटी एज एन एक्सचेंज स्टूडेंट. ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको फूड डिफरेंट मिलता है, कल्चर डिफरेंट मिलता है, वेदर डिफरेंट मिलता है, लोग डिफरेंट मिलते हो. यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, यू नीड टू बी अडेप्टिव. कमिटमेंट टू रिटर्निंग टू होम कंट्री. आपने 6 मंथ, एक सेमेस्टर कंप्लीट करने के वापस आने लाजमी. Reference to applicants living outside capital cities. We are glad we are from interior, from far-flung areas where we did not even get good education until our high school. हमें इस चीज का बेनिफिट होता है. But this is not like they'll select you because of side areas, but that will give you 2-5% more chances than other people. Reference to students that represent indigenous disadvantaged and underrepresented communities with no prior experience outside their countries. तो ये इसको उन communities की बात हो रही है जो फाटा है, एक्स फाटा है, गिलगित बलोचिस्तान साइड एरियाज हैं,
जहाँ पे उनकी कम्युनिटीज को बिल्कुल भी बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। सो इट्स नॉट लाइक कि वो सब वहीं से उठाते हैं, बट ये होता है लाजमी कि वहां से कुछ बच्चे जरूर उठाते हैं। तो हो सकता है कि आप ज्यादा कंपटीशन फेस करें, वो थोड़ा कम फेस करें, बट या द competition will be there. So this is all from my side, and if you guys have any question, please let us know. Floor is open for discussion. Someone said from the online audience that they have. I just. Okay. So can you ask them? Okay, online participant can also have questions. जी पूछें। नहीं, सब कुछ करना है, लिमिट नहीं करना अपने आप को। ये देखें, आपने कल्चरल और अपनी डिग्री के साथ के अलावा आपने बहुत सारी चीजें की होती हैं जो आपके लीडरशिप पोटेंशियल को शो करते हैं, तो आपने वो भी इंक्लूड करने हैं जो रिसेंट हो और इम्पोर्टेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया और आपने कोई इवेंट लीड किया, अगर आप इन दोनों में से कोई देखें सर्टिफिकेट, तो आप ऑब्वियसली लीड वाला सर्टिफिकेट डालेंगे, बिकॉज दैट शोज, दैट पोर्ट्रेज योर लीडरशिप स्किल्स। तो आपने सब ऐड करने हैं अप टू 10। वो आपसे आपकी स्टेटमेंट में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ऐसे स्टूडेंट हों जो अपने कंट्री के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटी, अपनी कम्युनिटी के अंदर एक्टिव हैं, काम करते हैं, और आप एकेडमिकली भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं कर सकते। आपको वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ जब आप बाहर जाएंगे तो आप अपनी कम्युनिटी का एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करेंगे, साथ साथ वहाँ से अच्छी चीज़ें सीखेंगे, और वापस आके सीखना नहीं है सिर्फ, वापस आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे, रिटर्न करेंगे अपनी कम्युनिटी को। क्योंकि आप देखें, इसको कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हमेशा क्यों कहा जाता है? वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती क्या? एजुकेशन नहीं होती? सेमेस्टर में हम कुछ नहीं पढ़ते। इनकी 4/4 GPA थी। मैंने 2 इंजीनियरिंग कोर्सेज किए थे जहाँ पे ट्रांसफर हुए थे। सब कुछ होता है वहाँ पे एजुकेशन, बट कल्चरल एक्सचेंज इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशनशिप्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाता है, जिसके अंदर पाकिस्तान से बच्चे जाते हैं, हमारी एक पॉजिटिव इमेज पोर्ट्रे करते हैं। फिर इवन इतना होता है कि जो होस्ट फैमिलीज वहाँ पे मिलती हैं वो हमारे बच्चों, स्टूडेंट्स की, एलुमनाई की शादी पे, उनके फैमिली में कभी आते हैं विजिट करने, तो ये रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने का तरीका होता है। तो आपसे वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्लास से बाहर भी निकलते हो, क्लास में भी अच्छे हो। ओके, आई होप आई क्लियर्ड योर क्वेश्चन। जी जी प्लीज। There is one online mute. So there is one question from the online participant. Okay. ओके सर। There is one question from the online participant that should we mention our volunteership internship in SOP? वॉलंटियरशिप और इंटर्नशिप को आप एसओपी में तभी मेंशन करें जब वो आपके वहाँ पे किसी पार्ट के साथ रिलेट कर रही हो। अदरवाइज एक ऐसी चीज जिसका सर्टिफिकेट आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपने ऑलरेडी एक्स्ट्रा करिकुलर या एडिशनल इन्फो के अंदर वो मेंशन की हुई है, तो आप उसको पर्सनल स्टेटमेंट में ऐड करके अपने वर्ड जाया ना करें। अगर वो रिलेट कर रहा है किसी चीज से, अगर वो आपके स्किल सेट के साथ रिलेट कर रहा है, कोहेरेंट है, फिर आप ऐड कर सकते हैं। जी प्लीज। बिल्कुल रिव्यू करवा सकते हैं आप एलुमनाई से। हम जैसे हम में से कोई हो गया या आपका कोई और फ्रेंड है, कोई और सीनियर है जो एलुमनाई, उनसे कांटेक्ट करें, उनके फ्री आवर्स पूछें, उनको सेंड करें। फिर वो ये नहीं कह सकता कि वो आपको बता दें कि आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। हाँ, वो अपनी गाइडलाइंस जो हैं वो आपको दे सकते हैं कि आई थिंक दिस इज
हाउ इट इज कि यहाँ पे आपने कोहेरेंस दी है नहीं दी, आपने ये जो पॉइंट आपने मेंशन किया है दिस डज नॉट लुक गुड, या आपकी कुछ ग्रामेटिकल एरर्स हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि यू गाइस आर स्टडिंग इन अ रियली ग्रेट यूनिवर्सिटी, तो आप अपनी जो पर्सनल स्टेटमेंट है उसके अंदर जो आप इंग्लिश लिखें उसको आप अपनी तरफ से डबल चेक कर लें। कहीं भी किसी भी एल्यूमिनाई आपको आप भेज रहे हैं, सो दैट क्रिएट्स अ इमेज इन देयर माइंड। ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होने चाहिए, सेंटेंस आपके करेक्ट हों। इट्स ओके टू यूज सिंपल वर्ड्स, माय राइटअप्स आर सिंपल लाइक नथिंग, यू नो, आई डोंट यूज जम्बल्ड वर्ड्स, आई डोंट नो देम एक्चुअली। तो मैं बहुत सिंपल वर्ड्स लिखता हूँ, बट हाँ ये है कि ग्रामेटिकल एरर्स नहीं होते उसके अंदर, आपने ये ज्यादा ध्यान रखना। हाँ रिव्यू करवाएं, अच्छी बात है। डिपेंड्स फ्रॉम कंडीशंस टू कंडीशन। लास्ट ईयर कुछ इंटरव्यूज पर्सन में हुए थे, फिर जैसे ही 2 मार्च 2020 से लॉकडाउन हो गया था, या 28 फरवरी से, तो उसके बाद जो इंटरव्यू थे वो उन्होंने ऑनलाइन किए थे। अभी पता नहीं है कैसे होगा, डिपेंड्स ऑन आवर कंट्रीज कंडीशन, कोरोना वायरस। यस प्लीज। सॉरी, वो आपको डिग्री नहीं देंगे, एकेडमिक सेमेस्टर होगा, वो आपको एक ट्रांसक्रिप्ट देंगे सर। हाँ वो अलग होगा, लेकिन वो कोर्सेज अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन के हिसाब से उठा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप अभी 5वें सेमेस्टर में हैं, 5वें सेमेस्टर में आपने अप्लाई कर रहे हैं और 6ठे में आप यूएस जाते हैं, ऐसा होता नहीं लेकिन 2 सेमेस्टर लग जाते हैं। लेकिन लेट सपोज आप 6ठे सेमेस्टर में यूग्रेड पे गए और आप यहाँ पे जो 6ठे सेमेस्टर में कोर्स पढ़ रहे हैं, तो उनको आपने आउटलाइन से देख के, आपकी जैसे हर बैच की होती है आउटलाइन से देख के आपने वहां से मैच कर लिया और आपको 2 कोर्सेज मिल गए। फॉर एग्जाम्पल 2 कोर्स आपको मिले 6ठे के, एक आपको मिला 7वें सेमेस्टर का, तो आप इंटरनेशनल ऑफिस और अपने एचओडी से कंसर्न करके वो कोर्सेज उठा सकते हैं, तो उठा लें, मैच द आउटलाइन विथ योर कोर्सेज, देन वो आपके यहाँ यूनिवर्सिटी में भी ट्रांसफर हो जाएंगे और उसी तरह से आपको वो कोर्स वापस आके फिर से नहीं पढ़ने पड़ेंगे। तो इस तरह से वो आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स 2 हो जाएंगी, बट दोस कोर्सेज विल बी मेंशन्ड इन योर IBS transcript as well. Sure, sir. Sir, my CGPA is 3.11, but I have no transcript and my industry is from Lahore, so I am from Fairfield, and what I do now. You should get unofficial transcript if you know your university has that, and then upload it. That can be a chance. अगर आप प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट ले सके तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो ऑफिशियली वो मांगते हैं ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है। ड्यू टू कोरोना यू कैन सबमिट unofficial transcripts, that will work as well, but for your interview you need to have your latest transcript and that should be official one. For now you can submit the unofficial transcript from CMS if you have that. IBS students can do that as well, but आपकी यूनिवर्सिटी ऑनलाइन नहीं चल रही, फिजिकल चल रही है, so it's better कि आप प्रोविजनल अटैच करें, क्योंकि you don't want to take a risk यार। 600 रुपए भर लो, $30,000 ज़ाया क्यों कर रहे हैं? Also keep in mind that you probably will have to take an extra semester when you come back. Keep that in mind. हाँ, sure. sir. Yes. अच्छा, आप में से अप्लाई प्लीज वो करें, वो है सीरियस, वेरी सीरियस, ठीक है, क्योंकि आप सारे स्टूडेंट्स का फिर इशू ये होता है, स्पेशली फॉर द गर्ल्स, उनके पेरेंट्स का इशू होता है परमिशन का, although it is funded or non funded, it doesn't matter. कोई भी स्कॉलरशिप होती है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली फॉर द गर्ल्स इट इज वेरी नेसेसरी टू हैव कंसेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। उनके लिए चले अब इस स्टेज तक होता है, इंटरव्यू के स्टेज तक भी होता है, जब फाइनल सिलेक्शन हो जाती है, जब राइट का टाइम हो जाता है, तब उनके पेरेंट्स उनके साथ डिस्कस करते हैं। तो आई हाईली रिकमेंडेड फॉर दोस गर्ल्स डू नॉट अप्लाई, क्योंकि आप फिर सीट्स जाया कर रही हैं। आई एम वर्किंग इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफिस, और जो हमारे MOUs के थ्रू आप जा रहे हैं एक्सचेंज प्रोग्राम पे, हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बिहेव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सीट्स ज़ाया हो जाती हैं। और जो भी दूसरा कैंडिडेट होता है वो पोटेंशियल कैंडिडेट पीछे रह जाता है। आप इस नॉन सीरियस वजह से एक कीजिए। दूसरी, आपका जो सेमेस्टर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली आपका एक टाइम एक्सटेंड होगा, 6 मंथ्स या 7 मंथ्स जो भी होता है, उस पर आप पैनिक ना करें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, नहीं मैं क्यों करूँ, मैं एक तो पढ़ के आया हूँ, मेरे को घूमने थोड़ी क्या था, मतलब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का इस तरीके का एक्सपीरियंस होता है, और ये मेरा एक्सपीरियंस है, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग ऑल दिस थिंग्स। एक चीज़ और देखें, हम स्टूडेंट्स को बाहर इसलिए भेज रहे हैं टू गेट द एक्सपोजर, ठीक है, आप यूरोप जा रहे हैं, US जा रहे हैं और चाइना जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आई हाईली रिकमेंडेड कि आप उस तरीके की कोर्सेज लें
उसमें आपका एक्सपोजर और आपके स्किल्स इनहेंस, बजाय कि आप अपने कोर्सेज वेरिएट की तरफ भागें। हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं तो पढ़ के आया हूँ, मेरा कोर्स वेयर करें, ये करें, वो करें। आई हाईली रिकमेंडेड यू कि आप वहाँ पे जाएं, तो आप लैंग्वेज कोर्सेज करें, टेक्निकल कुछ कोर्सेज करें। जरूरी नहीं है कि वो आपकी डिग्री का पार्ट बन जाए कि आपको वेवर मिल जाए किसी और कोर्स के साथ, बट ये आपके एक मतलब आपकी पर्सनालिटी में चीजें डेवलप होगी। आपकी लैंग्वेज, आप जाएंगे, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप कोई वहाँ पे लैंग्वेज का कोर्स लेते हैं, या आप कोई स्किल लेते हैं, आप कल्चरल कोई कोर्स लेते हैं, वो में आपको चीजें कहते हैं कि आप पढ़ें, जिनसे आपकी वो सारी चीजें और रिजल्ट आपके हैं, तो बजाय कि आप कोर्स वेरिएट के पास जाए। देखिए आपका टाइम तो वैसे ही जा रहा है ना, आपकी डिग्री वैसे ही एक्सटेंड हो रही है, लेकिन उसके बिहाफ पे आपको कुछ फायदे भी मिल रहे हैं। एक तो फायदा आपको ये मिल रहा है कि आपको स्किल्स आपके एनहांस हो रहे हैं, आपको यूएसए का एक्सपोजर मिल रहा है, और क्या चाहिए आप लोगों को, और वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। तो मतलब मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप वेरियर की तरफ भले जाएं, ठीक है, आपकी 20% कोर्सेज वेव ऑफ हो जाए, आप कोशिश करें कि आपकी 80% चीजें एनहांस हो आपकी अपनी पर्सनैलिटी में, ठीक है। और अगर कोई ट्रांसफर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है कोर्सेज रिलेटेड, अगर आप वाकई वेरियर की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, मैं अपनी डिग्री एक्सटेंड नहीं कर पाना चाह रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, तो उसके लिए आप, ठीक है, आप कोर्सेज लें। आपको कोई एक कोर्स फॉर एग्जाम्पल आपने सेलेक्ट कर लिया है, आप चाह रहे हैं कि मैं यूएसए से जाकर पढ़ के आ जाओ, तो आप कोशिश करें कि वो आप यहाँ पे आईबीए में जो टीचर है, फैकल्टी मेंबर है, उससे आप थोड़ा रिव्यू करवाएं अपना कोर्स। इससे अगर मैं ये कोर्स लेता हूँ तो आप क्या समझते हैं कि क्या होगा, मतलब ये मुझे वेरियर मिल जाएगा या आपके कोर्स सिमिलर होगा, या आप इस तरीके से आप अपने फैकल्टी मेंबर से डिस्कस कर लें। एंड फॉर द एसओपी पर्सनल स्टेटमेंट, आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा बहुत मैंने टेक्निकल स्टूडेंट्स में थोड़ा इशू मैंने फील किया हुआ है, आप कोशिश कीजिएगा जब आपका फर्स्ट ड्राफ्ट बन जाए ना, तो आप अपने किसी भी इंग्लिश टीचर भी यहाँ पे आईबीए में कोई फैकल्टी मेंबर हो इंग्लिश का, आप उनसे एक दफा रिव्यू करवा लीजिएगा। हो सकता है कोई भी उसमें कोई माइनर सा इशू भी हो, तो आप वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा, प्लस में आपकी वो चीजें फिर इंक्रीज हो जाएंगी, और आप फ्यूचर में ये चीजें फिर रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। और कोई, मुझे पता है आप यहाँ पे कोई भी सवाल नहीं पूछ रहे हैं, अगर दो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, मैं जानती हूँ। वहां से एक क्वेश्चन है Online. Okay, so sir, what if I contributed in societal activities but I don't have any proof or certificate? Should I mention it in personal statement? किसी तरह का तो प्रूफ हो सकता है, फेसबुक पे किसी पेज पे पिक्चर्स अपलोड हुई होंगी, किसी यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड हुई होगी, आपके पास अगर अभी पिक्चर्स पड़ी हैं तो अपलोड करके उसके लिंक लगा दें फॉर गूगल फोटोज पे, गूगल ड्राइव पे। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर भी एसओपी में मेंशन कर दें कि बट आई एम लाइक, मतलब मुझे ये श्योरिटी है कि हम कोई भी कम्युनल एक्टिविटी करते हैं तो उसका कोई ना कोई प्रूफ होता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी आप पर्सनल स्टेटमेंट में मेंशन करें, क्योंकि दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनी बेटर। अगर आप ना नहीं कर रहे तो करना ना करने से बहुत ज्यादा बेहतर है। नहीं, Ugrad में नहीं होता। In advance they will get the money. No, they will not get the money, but they also don't have to pay for the money. You will even get money for your expenses during your flight to the United States. When in pre-departure orientation, which is held in Islamabad, they will give you some amount for for airport expenses and some. So they will start funding you as soon as you get shortlisted. बट साइड में आपको अपनी पॉकेट भी भरी हुई रखनी है, ऐसे नहीं है नहीं, नो सीरियसली यू डोंट, नहीं वैसे आपको यूग्रेड के लिए भरी हुई पॉकेट भी, यू जस्ट नीड टू हैव इनफ मनी फॉर योर ट्रैवल। इस्लामाबाद में पहले आपके जाने से एक महीना पहले आपको $250 $300 दे देते हैं कि आप एक्सपेंसेस में, so you don't have to worry about a single penny. Ugrad, Sir, he is waiting since a while. नहीं, आप उसको सर्टिफिकेट देके एसओपी में तब मेंशन करें वो जब वो किसी चीज के रिलेट हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने
सर्टिफिकेट अपलोड किया और आप ऑलरेडी वहां पे आप पर्सनल स्टेटमेंट सिर्फ एक लाइन लिख रहे हैं कि आई अटेंडेड सीबामन, तो उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। जब आप वहां पे पब्लिक स्पीकिंग की बात करें तो आप मेंशन कर सकते हैं आई एम अ गुड पब्लिक स्पीकर, देन दैट एडेड टू माय स्किल सेट, फॉर दैट आई आल्सो अटेंडेड सीबामन। इस तरह से रिलेट कर रहा है तो क्यों ना मेंशन करें। बाकी आपको अगर वर्ड जाया करने के लिए आई आल्सो अटेंडेड सीबामन, आई अटेंडेड न्यूमन, आई अटेंडेड दिस, तो ये तो आपने सर्टिफिकेट दिए ऑलरेडी। आप अपने ही वर्ड्स मिनिमाइज कर रहे हैं जिसमें आप बात कर सकते हैं। उसका इम्पैक्ट बताएं कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ, बेनिफिट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, how this it benefited? this is basically a story that you write about yourself in 250 words, simple put. The last question. If you are on, my experience was that I was on a scholarship here at IBA. So my scholarship was of National Bank. So CDC helps you with that. They will freeze your semester, and when you will come back, and for that extra semester, they will use that fees. तो जो वहाँ उस सेमेस्टर की फीस आपकी स्कॉलरशिप की रह गई थी, तो वो उसको यूज करते हुए आपको वापस आके कोई फीस पे करने की टेंशन नहीं होगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप आते हैं और आप एक सेमेस्टर से कंटिन्यू करते भी हैं, ठीक है, वो तो आपको अगर स्कॉलरशिप मिली हुई है तो आपकी उससे कंपनसेट हो जाएगी, अगर नहीं है देन यू हैव टू पे। दूसरी चीज ये कि अगर आप फॉर एग्जांपल आते हैं फोर्थ सेमेस्टर में, लेट्स से आप यहाँ से फोर्थ सेमेस्टर में जा रहे हैं, आप 5वां वहाँ पे आके कर रहे हैं, यहाँ पे आपको फिफ्थ में ही आके अपना रिजल्ट देना है। उसके बाद ये होगा कि आपके जो एक्स्ट्रा कोर्सेज रह जाएंगे ना, आप लेट्स से फॉर एग्जांपल जून जुलाई में कर रहे हैं, देन यू हैव टू फीस, you have to pay your fees. वो जो आप कोर्स वाइज सेमेस्टर की और या कोर्सेज की फीस पे करते हैं, वो आपको फीस पे करनी पड़ेगी if you are, even though if you are in on scholarship. नहीं, I think that varies from scholarship to scholarship. हमारी scholarship मैं आपको बता दूं, he's very right. आपके एक्सचेंज वाला जो यू ग्रेड वाला जो है ना, दूसरे की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो यू ग्रेड वाला एक्सचेंज प्रोग्राम है उस पे हमें कुछ टाइम पहले थोड़ा इशू आया था। फॉर एग्जांपल वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सक्खरा यूनिवर्सिटी वाज सिलेक्टेड फॉर द यू ग्रेड, तो जो उसके पास इत्तेफाक से फॉर एग्जांपल जो स्कॉलरशिप यहाँ पे आईबीएम में थी वो भी यू ग्रेड, वहाँ पे क्लेश आया था, यूएसएड की थी। हाँ, यूएसएड की थी, तो यहाँ पे उसके साथ इशू आया था। जो डोनर था हमारा यूएसएड वाला, वो उस चीज को नहीं कंपनसेट कर रहा था, ठीक है। तो हो सकता है, आई एम नॉट क्लियर ऑन इट, वी कैन आस्क सिंपल जैसा कि आपने कहा आपको मिलेंगे 50 $3,000 हाथ में हैंड कैश। उसके यहाँ पे आप 50-60 हजार जाया कर सकते हैं। ओवरऑल प्रोग्राम की जो कॉस्ट है वो 30 to 40। सर मैं अभी यही कहने वाला था। ठीक है, आप बता दें इसमें से भाई थोड़ा नहीं सर नहीं बचेगा, नहीं बचेगा यार, नहीं भी बचेगा, सर नहीं बचेगा, सर नहीं भी बचता है तो आप 50-60 हजार बचेंगे सर, बचेंगे। बच्चे अपना दिल मारेंगे। She still is using her iPhone that she got from America from the money of Ugrad. So मैं ये कहना चाहता हूँ कि $3,000 मिलते हैं, ठीक है, सर इसकी मैं नहीं बताना। $3,000 you get in hand cash, वो आपकी पॉकेट मनी होती है। $500 बचा के आ जाना, इधर फीस भर लेना, व्हाट्स द प्रॉब्लम। ये बात की बात है। अगर आप रास्ता ढूंढना चाहें तो रास्ते मिल जाते हैं, प्लीज। ओके, लास्ट क्वेश्चन देन वी विल फिनिश, राइट? आप फिर बाद में कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप पूरा ऑयल में जो रियल सपोज मैंने डिपार्टमेंट चूज किया, मुझे नहीं पता क्यों करूं, अब नाम लेके आ गया। अब मेरा जो पैशन है जिसमें मैंने काम किया है और मैं करूंगा, तो उसको मैं कैसे कॉप अप करूंगा? तो फॉर एग्जांपल जब आप एएफ में आए, मुझे पता है आप एएफ के हैं, ठीक है, तो उसके बाद आपको समझ आया कि आप ये नहीं करना चाहते थे लेकिन आप आ गए हैं। तो जब आपको पता चलाते हैं कि आप नहीं कर रहे हैं, तो आपने ऑब्वियसली जो करना चाहते थे उसके लिए कुछ ना कुछ करना शुरू किया होगा। उसके प्रूफ होने चाहिए, उसके एविडेंस होने चाहिए, एविडेंसेस। तो उसको फिर आप मेंशन करें, पहले सर्टिफिकेट्स के अंदर लगाएं, एक्टिविटीज में लगाएं, नॉट द प्रॉब्लम जिसमें भी आप अटैच कर रहे हो। सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर अटैच होते हैं, एडिशनल इन्फो के अंदर आपकी वो एक्टिविटीज आती हैं जिनके आपके पास सर्टिफिकेट्स नहीं है, आप लिंक डाल सकते हैं। आपने फॉर एग्जांपल मैंने अगर कोरोना के अंदर राशन ड्राइव की थी तो उसका सर्टिफिकेट मेरे पास थोड़ी हुआ, तो उसकी तो मेरे पास कोई लिंक होगी ना, पेज की, कोई फोटोज होंगे, कुछ भी।
तो हाँ, उसके लिए आप अपनी पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर मेंशन करें कि आप एफ आपने ज्वाइन किया है, लेकिन आपका जो फर्दर गोल है वो ये है और आप उसके लिए ये ऑलरेडी कर रहे हैं अलोंग साइड योर डिग्री प्रोग्राम। ओके ओके, सो ठीक है। You have pictures? या So आप as you अगर said, you can upload the link of Facebook or the pictures, other videos, or else. Try to be as specific as possible. समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप उसको एक्सप्लेन कर दें इन द बेस्ट वे यू कैन, और फिर आप उसे इंटरव्यू में डिफेंड कर देंगे। अगर इफ दे विल फील कि रियलिस्टिक बात है एंड वी शुड एनकरेज दिस, तो वो फौरन आपको बुलाएंगे। जी, गर्ल्स की तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है जी। Yes. You can use two semester transcript. Yes. Because the result of third semester has not been disclosed yet. So you can, yeah, totally. Okay, so here we will finish it. Okay, and I think group photo के लिए हम चलते हैं नीचे। नहीं, मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा है, तो अच्छा, मैंने भी स्कॉलरशिप पे पढ़ा है, फुलब्राइट। अनफॉर्चुनेटली मैंने अप्लाई नहीं की, इसलिए मुझे मिली क्योंकि मुझे पहले ही मिल गई थी स्कॉलरशिप। तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं, I think you can save it, right? Yeah, totally. And on the final note, I'm very grateful to Miss Engineer Aisha Salim and Pankaj and Madam Shakuntala. And you people कि आप लोग आए, इसमें देखें विन-विन सिचुएशन है। आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, हमें बहुत खुशी होगी। एक पेरेंट्स और टीचर ही वाहिद ऐसे लोग होते हैं जो कि खुश होते हैं। पेरेंट्स अपने औलाद की कामयाबी को देख के खुश होते हैं और टीचर अपने स्टूडेंट की कामयाबी को देख के खुश होते हैं। तो मैं चाहता हूँ, एंड मैडम शकुंतला की भी आई थिंक यही ओपिनियन है कि आप मैक्सिमम वेट करें, अच्छी तरीके से करें। मेरे पास टाइम कम होता है, लेकिन आई कैन वॉलंटियर कि आई कैन आल्सो रिव्यू योर एसओपी, मे बी 5-6 अगर आप मुझे देंगे। इंग्लिश मेरी समहाउ आई कैन पॉइंट आउट, मैंने भी लिखा था एचएससी की स्कॉलरशिप के लिए, और फिर इस तरह के इवेंट्स में मुझे थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आई कैन आल्सो हेल्प। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए आप नीचे चलते हैं, एक फोटोग्राफ की एंड देन थैंक यू।